Hello, good evening, and welcome to yet another session of cost and management accounting. Today, we will discuss about one of the topics of module 2, which is cash budget. Myself, Dr. C. A. Vishwanathan Iyer, I welcome you again for a small revision session on this topic of cash budget. So, before we even start with the topic, cash is something which is very important for every business. So, to keep a tab on this very important element of the business, every businessman prepares a cash budget. There is a formal, there is an informal way of preparing cash budget. We will be talking about the most systematic and the business viewpoint cash budget, which is formal in nature. We even jump into practical question, what is the theory of cash budget? So cash budget, we know business involves receipts and payments of cash. So what is receipts is whenever cash is received, it is called as receipt, and when cash is paid, it is called as payment. In a cash budget, the period for which we are preparing the cash budget is very important. So let us say we are preparing cash budget for a year, but it's not necessary that every businessman will prepare for 1 year. Cash budgets can be prepared on monthly basis, weekly basis, or in a very huge organization. I have found businesses preparing cash budget even on daily basis. So cash budget is an estimation of cash that is to be received and cash to be paid, which is related to a particular period. Though we mention particular period, I would like to emphasize that it's not only for the period that the receipts and payments will be recorded. For example, if I receive cash for the next accounting year, we call it as advance. Though it is for the next accounting year, we in a final accounts in financial accounting record it as the income or the whatever expense for the next year. But in cash budget, since it is received in this particular year, we will record it as a receipt of the current year. So the emphasis is on cash, पैसा इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जोर है. फिर ये नहीं देखा जाएगा कि वो कौन से साल का है, इस साल का हो, अगले साल का हो या पिछले साल का. अगर अब मिला है तो आज रिकॉर्ड होगा कैश बजट में. Okay, so likewise, we also do not differentiate whether it is a capital expenditure, whether it's a revenue expenditure, whether it's a capital income or whether it is revenue income. आपको अगर फाइनेंस समझ में आया होगा तो रेवेन्यू आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैपिटल आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट. यहाँ पर ऐसा कोई भेदभाव नहीं. पैसा आया तो रिसिप्ट, गया तो पेमेंट. सो every organization we have a chief financial officer, CFO, we might have heard about it. So he prepares this cash budgets. It is prepared on the basis of trends in the market and definitely the experience of the finance team. As I just explained, in a cash budget, the focus is on cash. It does not make any difference whether the income or expenditure is capital nature or revenue nature. Also, the year to which the income or expenditure is related is irrelevant for preparation of cash budget. दोस्तों, पैसा के ऊपर यहाँ पर ध्यान रखना है. Let us go ahead and see how a format of cash budget looks like. So अगर आप कैश बजट के बारे में सोचोगे तो एक और इम्पॉर्टेंट बात है, डेफिनेटली जो भी पीरियड का हम लोग बना रहे कुछ कैश बैलेंस हमारे पास होगा और होने के बाद वो पीरियड के बाद क्या बचेगा तो इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग बैलेंस एंड when we look at the format of cash budget, so this is a very typical format of cash budget. It starts with opening balance, whatever cash is received. Now how will cash be received in a business? So it will be from cash sales primarily. If we are having credit sales, we don't record credit sales in cash budget, but after some time we will receive the amount from the debtors. The person to whom the goods is sold is called as our debtor, the customer. So as and when we record,
receive the cash, we record it in the cash budget. Say for example, I have said month 1, month 2, month 3. My credit sales happen in month 1, but I receive the cash after 1 month. So what does that mean? In the cash budget, that amount of credit sales which is given for the month 1, the cash issued from debtors will be recorded in month number 2. To be more clear, let us say sales happen in January, and our policy as a company is to give 1 month credit. So naturally हम लोग कैश इश्यूड फ्रॉम डेटर्स लिखने के लिए वी विल राइट इट इन मंथ 2, मंथ 1 में नहीं आएगा. वैसे मंथ 2 का जो सेल्स है मंथ 3 में आएगा, इट विल गो ऑन लाइकवाइज. कॉल मनी रिसीव्ड, दिस कैन बी वन ऑफ द receipts of cash as far as any business is concerned, joint stock company is concerned. There may be sale of assets, there can be any kind of dividend or interest received. So सारे जगह पर जो भी तुमको पैसा आता है वो सब रिसिप्ट्स में आ जाएगा. जो टोटल रिसिप्ट्स है वो लिखते हैं. पेमेंट्स में जैसे वी हैव कैश परचेजेस, ठीक है, और क्रेडिट में खरीदा तो वी विल हैव कैश पेड टू क्रेडिटर्स. फिर बिजनेस के सारे खर्चे जितने आप जानते हो, ठीक है, इट कैन बी वेजेस, इट कैन बी सैलरीज, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ एक्सपेंस दैट यू कैन remember, everything will come under the payments category. Likewise, it can be purchase of machinery, purchase of investment. I told capital revenue यहाँ पर नहीं देखा जाता है. पैसा कितना आया, पैसा कितना गया. सो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस जो भी मंथ 1 के बिगिनिंग में रहेगा उसमें हम लोग रिसिप्ट्स ऐड करेंगे, पेमेंट्स माइनस करेंगे, तो वी विल गेट आवर क्लोजिंग बैलेंस. दिस month 1 closing balance will become month 2 opening balance. Again the same thing will be done for students. When you are solving, what you have to do is first prepare a format like this. Write down all your receipts and all your payments. Take a total of receipts, take the total of payments, and then opening and closing should be done in a single sequence. पहले हर महीने का अलग अलग मत करना, पहले सारे हर मंथ का रिसिप्ट्स, सारे महीनों का पेमेंट्स रिकॉर्ड कर लो. उसके बाद एक बार ओपनिंग बैलेंस लिखो, रिसिप्ट्स के टोटल ऐड करो, पेमेंट्स का टोटल माइनस करो, क्लोजिंग मिलेगा. अगला महीना लेके जाओ, कंटिन्यू द थिंग, यू विल गेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सेकेंड मंथ, टेक इट टू द थर्ड. लाइकवाइज इट बिकम्स ईजियर. दिस इज जस्ट एन ओपिनियन ऑफ माइंड विच आई फॉलो. आपको अगर कन्वीनियंट लगता है मंथ वाइज करना तो यू कैन डू दैट. देयर इज नो हार्म इन इट. वी मूव अहेड to one practical example to understand what exactly is this particular thing. So friends, let us say a newly started SSG company wishes to prepare cash budget from May. Understand, the moment it says newly started company, the one thing you have to understand is there will be no opening cash balance. You are required to prepare cash budget for the first 6 months from the following estimated revenue and expenses. So you are given the details from May, June, July, August, September, October. 6 महीने का हमको बनाना है. खर्चा दिया है. You are given sales, you are given material, wages, production overhead, selling and distribution overheads. Remember, sales is our receipts part. All other 4 columns are our payments. Okay, now even though it's a new company, they say cash balance on 1st May was 10,000. तो ये हमारा opening balance हो गया. A new machine is to be installed at 30,000 on credit to be paid in 2 equal installments in July and August. तो भले ही कभी भी मशीन खरीदा हो, हमारे लिए पेमेंट्स कब हो रहा है? जुलाई अगस्त. तो these are the months in which we will mark it. अच्छा, 30,000 in 2 installments, so payment will be 15,000 in July, 15,000 in August. Sales commission at 5% on total sales is to be paid within the month following the actual sales. So what does it say? We have to make an extra payment of sales commission, and that is 5% of the sales. Okay, now when it is to be paid, it is to be paid within the month following the actual sales. यानी मई में जो सेल हुआ उसका कमीशन हम जून में पे करेंगे, जून का कमीशन जुलाई में चलेगा, जुलाई का कमीशन अगस्त, so on and so forth. Rupees 10,000 being the amount of second call may be received in July. Share premium amounting to 2,000 is also obtainable with second call. Now what does that mean? ये पैसा मिलने वाला है कंपनी को. कंपनी के लिए कॉल मनी रिसीव्ड इज एन इनकम, बट हियर द कॉल मनी इज रिसीव्ड along with share premium. Now some of the students ask me a very genuine doubt. They say, sir, यहाँ पर वर्ड दिया है may be received, so should we consider it?
Now understand, cash budget is not actuals. Budget means estimations. So yes, all future incomes must be taken into account. Okay, so do not worry about the English grammar as such. आपको consider करना है. Now they say further, period of credit allowed by the suppliers is 2 months. So credit, when we say supplier credit, they are talking about the materials. So 2 months. How do you calculate 2 months? So very simple. Any material that is purchased in the month of May, so you have to count 2 months. Now here students make a silly mistake. They say June, July. So payment will be made in August. No, that is wrong. मई में कब खरीदा हमको मालूम नहीं. It can be either purchased on the first day, middle of the month, end of the month, we don't know. So May must be considered. So when we say 2 months credit, so it's May and June. So payment will be done in July. Period of credit allowed to customers is 1 month. So if there are any credit sales, you have to understand 1 month credit. यानी मई का सेल जो होगा उसका पेमेंट हम लोगों को जून में मिलेगा. कंफ्यूजिंग होता है. बहुत सारे जन मई का सेल जून छोड़कर जुलाई में. नो, रॉन्ग. मई का अगर 1 मंथ क्रेडिट है तो इट विल बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ जून. Delay in payment of overheads is 1 month. When they say overheads, it's applied to production overheads, selling and distribution overheads. Again, 1 month means next month. Excuse me. Delay in payment of wages is 15 days. That is half month. Now this is very dangerous. 15 days, how do we calculate? So there is a big problem. So to make it easy, when they say half month, so what we do is half month we make the payment in the same month and half month we do it in the next month. अगेन टेक्निकली कुछ स्टूडेंट्स लोगों का डाउट होता है, सर 4000 में से लेट अस से 1 मई को काम किया तो 15 तारीख और 30 तारीख को पेमेंट होगा, तो एक्चुअली 15 डेज क्रेडिट यानी उसी महीने में पेमेंट हो जाता है क्या? नहीं. Then that does not justify the 15 days credit, because in that scenario they should have given 1 month or same month. So to justify 15 days, if half month credit is given, we make half payment in the current month, half payment in the next month. So if I consider the wages of May as 4000, 2000 will be paid in May and 2000 in June. Likewise 4400 जो जून का wages है, 2200 will be paid in the month of June itself and 2200 in the month of July. So जून में याद रखने का 2000 मई का और 2200 जून का, ऐसा करके हम लोग 4200 पेमेंट करेंगे. कैश सेल्स टू बी 50% ऑफ टोटल सेल्स. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो जो सेल्स दिया है अपने को, इसमें 50% कैश सेल है और 50% क्रेडिट सेल है, और क्रेडिट सेल का पेमेंट 1 महीने के बाद. सो बहुत ज़्यादा जब कंफ्यूजिंग होता है, इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट यू राइट इट प्रॉपरली. सो कैश बजट में हम लोग जब भी जाएंगे, वी विल ऑलवेज प्रिपेयर वर्किंग अंडरस्टैंडिंग. सो वर्किंग नोट्स कैसे होगा? सबसे पहला कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स. नाउ वी नो देर आर टू सेल्स, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स. कैश सेल्स का कैसा है? 20,000 रुपया मई महीने में सेल हुआ, तो देखो 10,000 रुपया आपको 50% दिख रहा है. और जहां डेटर्स का बात आ रहा है, उन्होंने क्या बोला था? 1 महीने के बाद. इसीलिए मई का जो 10,000 रुपया पेंडिंग है वो जून में आएगा. अब एक बार आपको ये लॉजिक समझ गया, तो जून का सेल 22,000 है, तो देखो 11,000 जून, 11,000 जुलाई. सो यू राइट दैट वे, इट बिकम्स ईजियर एंड देन यू कैलकुलेट द टोटल कैश रिसीव्ड. One more calculation which was difficult, if you remember, वो half month वाला. So wages, so 50% in the same month and 50% in the next month. देखो हमने जो बात किया था, मई का 4,000 रुपया, मई में 2,000 रुपया और जून में 2,000. जून में 2,000, 4,400 था, तो 2,200, 2,200. एक बार आप ऐसे डायगनली लिखना चालू करोगे, इट बिकम्स ईजियर. So these were the two difficult calculations as far as this question was concerned. Other things were pretty easy. So if we look forward, so friends, we will see that the and solution of cash budget looks something like this.
पहले तो मैं एक्चुअली ये ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखता हूँ, मैं जैसे बताया आप लोग को थियरी सिखाते हो, पहले मैं लिखता हूँ कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स एंड एक और इनकम था वो था सेकेंड कॉल विथ प्रीमियम 12,000 रुपया. तो आई कैलकुलेट द रिसिप्ट्स. Now A plus B is to be done later on. So you can either do this or skip this step. This is optional. पेमेंट्स में पेमेंट टू क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल्स, वेजेस का हमारे पास वर्किंग नोट था, बाकी सब एक महीने के बाद, इसलिए मई का इसमें कोई पेमेंट नहीं है, जून से चालू हो गया. और नया मशीनरी हमने परचेज किया था जुलाई अगस्त में 50-50%. सेल्स कमीशन बोला था 5% ऑफ द सेल्स, लेकिन इट इज़ टू बी पेड फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, इसीलिए मई का 20,000 का 5% 1,000 होता है, विच वी सी इन द मंथ ऑफ June, so on and so forth. So I calculate the total payments. Then I write opening balance of cash 10. So 10 plus 10 becomes 20 and my total payments here is 2,000. तो closing becomes 18. 18 जून में लेके जाते हैं, इसका 21 ऐड करके 39, खर्चा 9,200 माइनस करके 29,800, ये सिलसिला करो तो आपका कैश बजट काफ़ी इजी तरीके से कंप्लीट हो जाता है दोस्तों. सो कैश बजट बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप उसका एक बार टेक्निक समझ. थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग. देर आर मेनी मोर क्वेश्चंस which have been put up in my Linktree account. Do refer the question and answers, and if you have any doubt you can definitely come back to me. So this is Dr. C. A. Vishwanathan Iyer signing off. Thank you. Good night everyone. I'm sharing my WhatsApp number, but my only request is please do send me messages up to 9 p.m. Do not extend. I generally do not reply post that. You can follow me on my LinkedIn account as well as my Instagram for your convenience. Thank you. Thank you so much.